So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the Hindu analysis of 29th March, that is today, Saturday. And here we will discuss in detail. So if I'm audible and visible, please write yes in the comments. Am I audible, visible? Is everything fine? क्या मेरी आवाज आ रही है? So basically, the Hindu analysis is taken by Govind sir, but on Saturday, since he is on off, so I take the class. तो चलो शुरू करते हैं. Let us begin with today's class. So basically, there was a first article which was talking about free speech. So can you please tell me which article of the Indian Constitution talks about free speech? We have discussed in detail about these things और हम लोगों ने कई सारे classes अगर आप हमको पहले से follow कर रहे हो, if you are following us for the past many days, then you will realize that we have discussed about free speech in detail. In fact, a few weeks back we had seen some controversies all regarding that comedy and all. So there also we had discussed about free speech and all. So here also the same thing, that the freedom of speech is there and all. So which article of the Indian Constitution talks about free speech? Please write me in the chat. And where do you find reasonable restrictions mentioned? Which? And so these are the questions that is there. And please tell me, I'm waiting for the response if anyone can answer. So basically, and there was another article talking about Twitter or X filing case against the central government. So we will discuss that also. But let us begin with first, this free speech is an integral part of healthy society, says Supreme Court. So basically, please tell me, guys, I'm waiting for the response. Freedom of speech is under article, which article? 19. So if you read article 19, it talks about all citizens shall have the right to freedom of speech and expression. And article 19(1)(a) talks about that. And in the same article, just article 19 clause 2 talks about reasonable restrictions. कि आपके पास फ्री स्पीच तो है, लेकिन फ्री स्पीच का ये मतलब नहीं कुछ भी बोल दीजिए. So there are some reasonable restrictions also, and the reasonable restrictions are sovereignty, integrity of India, security of state, friendly relations with foreign state, public order, decency, morality, or contempt of court, defamation or incitement to offense. So ये I think 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग almost around 8 reasonable restrictions are there. ठीक है, that is what you should be knowing about it. ठीक है, तो इसी की बात हो रही है. तो इस आर्टिकल में क्या हुआ कि there is a person called is a Congress member of Parliament, Mr. Imran Pratap Gadi, and there were cases were filed against him under section 196 of Bharatiya Nyaya Sanhita. I hope you are aware. Instead of IPC, now we are having BNS. ठीक है. So it was filed by the Gujarat police, and this is section 196 of Bharatiya Nyaya Sanhita, and this is penalizes a speech that promotes disharmony, enmity, hatred between two groups. ठीक है, तो सेक्शन 196 जो है वो ये है कि अगर आपको ऐसी भाषण देते हैं जिससे डिसहार्मनी, एनिमिटी हो, वही आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को वायलेट हो रहा हो, मतलब दैट इज व्हाट इफ यू लाइक, है ना, इसमें लिखा ना कि जैसे 19(2) में कि अगर है ना सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, है ना, सो इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए सेक्शन 196 इज देयर, that if you are doing this, then of course if you are causing disharmony, inciting violence etc or hatred between two groups, then you can be arrested. Of course FIR can be registered. तो यहाँ देख सकते हो 19 clause 2 talking about the same, है ना, exercise rights, sovereignty, integrity, security of state, public order, है ना, यानी आपने कोई ऐसी चीज बोली है, incitement to an offense, है ना, यानी आप भड़का रहे हैं कुछ ऐसी बात बोले, तो that is not free speech, and of course you can be FIR can be registered under 196 of section 196 of BNS. तो यही इनके खिलाफ इन्वोक किया गया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने हियर किया, सुप्रीम कोर्ट हर्ड व्हाट ही हैड सेड, व्हाट द पर्सन अक्यूज्ड पर्सन हैड सेड, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ फ्री स्पीच. And the Supreme Court said 75 years after that we became republic, we cannot be so shaky on our fundamentals that a mere recital of a poem, or for that any matter, such as stand-up comedy, can be alleged to lead to animosity or hatred amongst different community. मतलब ये बोला कि उन्होंने शायद कोई पोएम पढ़ी होगी, आई डोंट नो, लेकिन अगर कोई पोएम को पढ़ देने से पब्लिक में या स्टैंड अप कॉमेडी करने से ऐसा नहीं है कि दो समाज में, दो ग्रुप के बीच हैट्रेड हो जाएगा.
That is what the Supreme Court said. Justice A.S. Oka and Justice Ujjwal Buyun. ठीक है, so these are the two judges. They said कि अनिमिटी ऑफेंस सिर्फ कोई पोएम पढ़ देने से या स्टैंड अप कॉमेडी कर देने से ऐसा नहीं है कि दो समाज के बीच लड़ाई हो जाएगा और उसके लिए उसको अरेस्ट कर लिया जाओ, समथिंग लाइक दैट. दैट इज व्हाट एक्चुअली द जजमेंट केम. ठीक है, सो जस्टिस बुयन सेड टू द सॉलिसिटर जनरल दैट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री स्पीच मस्ट रिमेन रीजनेबल. है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो लिखा है ना आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, तो उन्होंने ये बताया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, है ना. Restriction does not mean it should be reasonable, means it should be convincing to the judge that yes, here you have stopped the free speech because that was really harmful, ठीक है, to the society. तो ये उन्होंने कहा person's view cannot be silenced merely just because the majority does not like the sound of them. मतलब उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी कुछ बोल रहा है और ज्यादातर लोगों को बात पसंद नहीं आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी बात को दबा दिया जाए, मतलब नहीं बोलने दिया जाए, something like that. So this is what the Supreme Court said, that is what the idea is. So the law enforcement authority and courts must employ standards of reasonable, strong-minded, firm and courageous mind, and not weak and vacillating ones and all. तो वही बता रहे हैं कि strong standards होने चाहिए reasonable restrictions के, law enforcement authority को ensure करना चाहिए and all, ठीक है ना, before initiating any criminal action against freedom of speech. That is what the article was. Now let us move on. एक judgment बहुत famous है, I'm sure you must have heard, S. Rangarajan versus P. Jagrivan Ram case. ये बहुत famous case है. अगर आपने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो अक्सर एडिटोरियल में मेंशन किया जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी सप्रेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोसेशन और थ्रेट्स ऑफ वायलेंस. मान लो कोई आदमी कुछ बोल रहा है स्पीच और उसकी स्पीच ऐसी है जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को वायलेट नहीं कर रही है, means a person is giving a speech which is a part of free speech, he is not violating reasonable restrictions, then his speech cannot be suppressed, or he should not just because there is a fear that his speech will lead to protest. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एस रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम केस में, कि कोई आदमी स्पीच दे रहा है और या कुछ बात कह रहा है और वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में नहीं आ रहा है, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं आ रहा है, यानी वो फ्री स्पीच में उसकी बात आ रही है, लेकिन जस्ट ऐसा हो सकता है कि वो कुछ बोले तो लोग प्रोटेस्ट करने लगे, तो उस वजह से उसकी फ्री स्पीच नहीं दबाई जा सकती. That is what the Supreme Court had said. The court said that it would tantamount to negation of the rule of law and surrender to blackmail intimidation. कि अगर किसी की फ्री स्पीच इस रीजन से दबा दी गई तो वो रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है और वो ब्लैकमेल इंटिमिडेशन के सामने सफर करना है, सरेंडर करना है. Okay, that is what you should be knowing. Now, on the first page, there was another article talking about X corporation. X corporation means earlier it was called as Twitter, है ना, and this Twitter was bought by Elon Musk, है ना, by I think 42 or 44 billion dollars something में 2-3 years back. I'm sure you must have heard it. So am I audible, visible? Is everything fine? एक बार लिख दीजिएगा, because I am not seeing anyone writing anything in the comment whenever I am asking a question. इसमें जो है दो चीजें, एक तो है देखो कोई भी जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड चीजें होती है, एक एक्ट है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इससे गवर्न होता है. तो इसमें 2-3 सेक्शन है जो आपको पता होना चाहिए. सेक्शन 79, इट इज वेरी फेमस. पहले आपको एक चीज समझना होगा, देन यू विल अंडरस्टैंड इट. एक कॉन्सेप्ट होता है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज. सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज. व्हाट इज सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज? सो बेसिकली जितना भी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जिसको आप एक्स कहते हो, है ना, एंड अदर्स प्लेटफॉर्म आल्सो, व्हाट्सएप, ये सब सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं. ओके, दे आर गिवन एक्सेप्शन इम्यूनिटी अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000 अगेंस्ट लीगल लाइबिलिटी. ओके, क्या लीगल लाइबिलिटी मैं बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, मान लो लेट्स से किसी आदमी ने, देयर इज अ पर्सन, the person's name is ABC. This ABC person posted something on X. X मतलब Twitter, है ना, now it is called as X. He posted something on X which was false, fake information, and this information led to, let's say, violence. People died, etc. Riots happen or something like that. Now, so for this violence, this person should be arrested. So basically, X, the officers of X cannot be punished for that. So section 79 ये कहता है कि मेरा प्लेटफॉर्म इन्होंने यूज किया, मान लीजिए कोई व्हाट्सएप पे किसी ने फॉरवर्ड किया, फेक न्यूज से वायलेंस हो गया, सो व्हाट्सएप पर से इज नॉट रिस्पॉन्सिबल.
जिसने फॉरवर्ड किया उसकी गलती थी, या जिसने लिखा मैसेज उसकी गलती थी. सो दैट इज सेक्शन 79. दिस यू शुड बी नोइंग इट. एक चीज आपको पता होना चाहिए. ओके, इज इट क्लियर? Is it clear? Please write yes, because I'm not able to see anyone writing in the comments. So if you are able to understand, listen my voice clear, please write yes in the comments so that I can understand. Yes, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको, clear है? Okay. Similarly, there is one more section. एक और है section 69A, capital A. Yes, sir. Okay, fine. Thank you. Score देखना. So basically, section 69 capital A क्या बताता है? So basically it says कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक्चुअली एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू ब्लॉकिंग ऑर्डर्स. ये सेक्शन आपको पता होना चाहिए. और ऑफ कोर्स ये जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो लिखा हुआ है उसी का रिलेटेड है ना. मान लो किसी आदमी ने ऐसी चीज पोस्ट कर दी एक्स पर या ट्विटर पर या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, विच इज ऑफ कोर्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया और अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. वही कि कोई मान लीजिए किसी ने कुछ पोस्ट किया और उससे वायलेंस होने का डर है, कोई वायलेंस, इंसाइटफुल, हेट्रेड स्पीच और कमेंट और ट्वीट और समथिंग लाइक दैट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेक्शन 69A कैपिटल ए ऑफ आईटी एक्ट को यूज करके एक्स के ऑफिसर्स को मेल करेगी, मैसेज करेगी कि आप इमीडिएटली उसको हटा दीजिए. ओके, सो दिस सेक्शन 69 कैपिटल ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट गिव्स सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड सिमिलर ग्राउंड्स. इसको ब्लॉक कर दीजिए, फौरन हटा दीजिए, नहीं तो इससे जो है violence हो सकता है and all, something like that. So that is what these are the two sections which are in the news. Okay, yes, fine है ना. अब देखो एक और इस आर्टिकल में जो मेंशन है वो सहयोग पोर्टल मेंशन है. ठीक है, और वो इसी से रिलेटेड सेंडिंग नोटिसेस. अगर गवर्नमेंट को नोटिस वगैरह भेजना होगा, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, मतलब वही सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सब की बात हो रही है. तो गवर्नमेंट जो है आईटी एक्ट के अंदर, मतलब सेक्शन 69A के अंदर नोटिस भेज सकती है कि इसको आप रिमूव कीजिए, हटाइए, है ना. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. एक सहयोग पोर्टल न्यूज में था. So that is what you should know. Then एक चीज और आर्टिकल में थी, रेस्टोरेंट कैंट इनफोर्स सर्विस चार्ज सेज दिल्ली हाई कोर्ट. अच्छा, आपने देखा होगा, एक्चुअली इसको रेस्तरां पढ़ते हैं टेक्निकली, बट नॉट इज वी से रेस्टोरेंट. तो बेसिकली व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट रेस्टोरेंट, तो अगर आप उनका बिल देखोगे तो बिल में कभी कभी लिखा रहता है सर्विस चार्ज. मान लो कुछ लिखा है 100 रुपया, समथिंग लाइक दैट, और नीचे बंद करके आया कुछ, या 20 रुपया, 50 रुपया, वॉट एवर इट इज. सो यू कैन से कि आई विल नॉट पे सर्विस चार्ज. ठीक है, ये पहले भी कोर्ट्स ने कहा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दैट इट इज नॉट एक्चुअली मैंडेटरी. अगर वो बंदा चाहे तो दे सकता है, चाहे तो मना भी कर सकता है कि नहीं हम सर्विस चार्ज नहीं देंगे. ठीक है, दैट इज व्हाट, एंड दिस वी हैव सीन अर्लियर आल्सो दीस जजमेंट्स. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. देन ये महाराष्ट्र हाई कोर्ट ग्रांट्स कुरान कामरा इंटरिम प्रोटेक्शन एंड ऑल. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. एक कॉन्सेप्ट होता है एंटिसिपेटरी बेल. यू नो व्हाट इज एंटिसिपेटरी बेल? इसका क्या मतलब होता है ना. So he had approached for interstate anticipatory bail until he could approach the Bombay High Court. Anticipatory bail का मतलब होता है कि there is a fear that he or she might be arrested. So before getting arrested, he has taken a bail. उससे पहले कि उस बंदे या बंदी को अरेस्ट कर लिया जाए, पहले ही हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाल करके एंटिसिपेटरी बेल ले लें, ताकि फ्यूचर में पुलिस अरेस्ट नहीं करे उस मैटर से रिलेटेड. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड नो, है ना. सर्विस चार्ज वगैरह बता दिया, है ना, कांट बी मेड मैंडेटरी. The next is जनता seeks aid as जनता, मतलब मिलिट्री जनता की बात हो रही है. This is actually talking about military of Myanmar, and I hope you are aware, we have seen military Myanmar's military. Ming Aung Hlaing is the army chief, है ना. So since 1st February 2021 we have seen military coup in Myanmar. So 1 फरवरी 2021 से हम लोग मिलिट्री को देख रहे हैं म्यांमार में, आपको पता होगा. So हुआ क्या कि म्यांमार और थाईलैंड दोनों में अर्थक्वेक आए हैं, and many people have actually died. तो different numbers है ना, कहीं 144 लिखा, कहीं कुछ और लिखा, but you should know that magnitude was 7.7, है ना, and of course 7.7 is very powerful. Now मैंने एक चीज आपको बताया है कई बार कि जनरली जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो प्लेट बाउंड्रीज पे आते हैं. We have discussed or not? जहां पर दो प्लेट मिलता है ना, यहां पर अर्थक्वेक आने का चांस बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, so wherever the two plates meet, so here is India, this is Myanmar, and this is Thailand. So we have seen what is the capital of Myanmar? Naypyidaw. ठीक है, और इसका है बैंकॉक, यहां पर मिलेगा शाओ फ्राई रिवर पर, है ना. These are tourist places also. तो
ये वाला जो रीजन है, अगर आप गौर से देखोगे, ये इंडियन प्लेट देख रहे हो, देखो यहाँ पे म्यांमार है ना, और ये वाला थाईलैंड है ना। अब आप गौर से देखो, इसके बगल से प्लेट बाउंड्री गुजर रहा है, सो देयर इज अ प्लेट बाउंड्री, ये वाला प्लेट बाउंड्री है ना, सो दिस इज अ प्लेट बाउंड्री, and here you will find Myanmar, here you will find Thailand. So basically they also lie in the area where this is an Indian plate boundary with Eurasian plate and all. ठीक है, और भी यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी प्लेट है, सुंदा प्लेट, जावा प्लेट भी है, बट उतना यहाँ पे नहीं बना, लेकिन आप समझ लो। इनफैक्ट ये पूरा रीजन जो है ना, ये वाला, इसके नीचे का मलेशिया इंडोनेशिया, आपने सुना होगा मलेशिया इंडोनेशिया में बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं, अगेन द सेम रीजन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ यू सी इट केयरफुली, कहाँ चला गया, हाँ, ये वाला रीजन भी प्लेट बाउंड्रीज में। सो दैट इज व्हाई वी हैव सीन प्लेट बाउंड्रीज एंड ऑल। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स जो आते हैं वो ये वाला रीजन है ना, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर। व्हाट इज दिस कॉल्ड, जो मैं भी ऐसे रेड से पेन से बना रहा हूं, इसको क्या कहते हैं गाइस, प्लीज टेल मी, व्हाट इज दिस रीजन कॉल्ड। मैंने कई बार बताया है, ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द अर्थक्वेक्स यहीं आते हैं, ये वाला रीजन में, ये वाला और ये वाला रीजन। व्हाट इज दैट कॉल्ड, एनीवन? These two together are called as Pacific Ring of Fire. मैंने बताया है Pacific, let me write it, Pacific Ring of Fire, yes, Circum-Pacific Belt, Pacific Ring of Fire, yes, sir. So that is what you should be knowing. Okay, now let's talk about editorial. India's geopolitical vision should be larger. ठीक है, here we are talking about the article written by Mr. T.S. Tirimurti. He has earlier served as the permanent representative to United Nations. तो उन्होंने वो अर्लियर यूनाइटेड नेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। आप ये वाली क्लास देख लीजिएगा, प्लीज वॉच दिस क्लास वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज यूनाइटेड नेशन, द प्रिंसिपल ऑर्गन, ही हैज डिस्कस्ड अबाउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एटसेट्रा, परमानेंट मेंबर्स, ये सब मैंने यहाँ बताया है, प्लीज गो एंड वॉच दैट। खैर, सो ये बता ही रहे हैं कि ही इज टॉकिंग अबाउट द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन थैंक्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर देयर नोबेल मिशन टू एंड फाइट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, है ना, दिस ब्रॉट जीएस टू इंडिया। तो ये सब बात हो रही है। फिर but there is a question to be asked, why has India refrained from playing a more active political role? इन इंडिया ने बहुत आगे आकर के रशिया यूक्रेन वॉर या कोई वॉर को रोकवाने की कोशिश नहीं की, उसकी पास्ट रीजन बता रहे हैं, जैसे बांग्लादेश 1971 वॉर, है ना, टू स्टॉप जेनोसाइड, देन 1988 में ऑपरेशन कैक्टस हुआ था, इसको पढ़िएगा थोड़ा। सिमिलरली श्रीलंका में 2009 में एलटीटीई के चीफ वाज किल्ड एंड एलटीटीई वाज डिफीटेड एंड ऑल। ठीक है, तो ये सब बता रहे हैं। फिर कुछ इस इंडिया के इनिशिएटिव्स बता रहे हैं, आपको फैक्ट्स ज्यादा याद रखना है, ठीक है ना, इतना कॉन्सेप्ट नहीं बट फैक्ट। जैसे वैक्सीन मैत्री पूछा भी था क्लैट में 2021 में। दिस इज अ इनिशिएटिव अंडर विच इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड कोविड वैक्सीन टू द वर्ल्ड एंड दिस वाज आस्क्ड इन क्लैट 2021. Similarly, we have been instrumental in establishing international solar alliance, India and France. तो क्वेश्चन आया था, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बताइए। दिस वाज आस्क्ड इन एलेट. India plus France is international solar alliance established in 2015 on the sideline of COP21. बताइए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, प्लीज टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पांस गाइस। द राइट आंसर इज गुरुग्राम, इंडिया। वही गुड़गांव उसको अर्लियर कहते थे, नाउ इट इज कॉल्ड एज गुरुग्राम, है ना, दैट इज व्हाट यू शुड नो. The next is, however, in the last 2 decades, India has rightly prioritized economic growth both under UPA and NDA. तो ये बता रहे हैं कि पिछले कई डिकेड्स में, लास्ट 20 सालों में यूपीए और एनडीए दोनों की सरकार में इंडिया ने काफी ग्रोथ किया है. We have reached 5th largest economy. So India is 5th largest GDP in which terms? Nominal terms, real term, which term, और PPP terms. ये पता होना चाहिए आपको. देखो इंडिया जो है जीडीपी नॉमिनल टर्म्स, यहाँ नीचे लिखा हुआ देखो गौर से, है ना. सो रैंक 1 जो है यूएस है, देन चाइना है, देन जर्मनी है, देन जापान है, एंड 5th इज इंडिया, ना. सो बेसिकली $4.27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये याद रखिएगा. इन जनरल ही पूछा जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी कितना है. तो हम लोग कहते हैं ना कि देयर इज अ टारगेट दैट इंडिया शुड बिकम बाय 2025. दिस वाज द टारगेट दैट इंडिया शुड बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. 2025 के अंदर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए. ओके, सो करेंटली we are having $4.27 trillion. Okay, GDP nominal terms.
ये ज्यादा प्रोमिनेंट होता है जब बाय डिफॉल्ट पूछा था कि इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला फिगर कोट किया था। बट समटाइम्स अगर पूछा जाए जीडीपी पीपीपी के टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में अगर पूछा जाए, सो आपको पता है लार्जेस्ट जीडीपी चाइना की है, यूएस की नहीं है। उसके बाद यूएस की है, उसके बाद इंडिया की है। सो इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पीपीपी। ओके, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट लार्जेस्ट यूएस नहीं है, चाइना है। लेकिन मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट अगर कभी बात किया जाता है, व्हेनेवर वी टॉक बाय डिफॉल्ट कि इंडिया की रैंक कितना है इकोनॉमी में, सो यू शुड से फिफ्थ, ये वाला नॉमिनल जीडीपी नॉमिनल कोट करते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, है ना। सो दीज आर द थिंग्स इज टॉकिंग अबाउट, है ना। देन इज टॉकिंग अबाउट अदर वेस्ट एशिया, गल्फ कंट्रीज, है ना, which were are look onto the unfolding of tragedy in Gaza etc and all. So that is what he is talking about. So पहले ये बताओ गल्फ कंट्रीज किसको कहते हैं? Gulf countries, which countries are called as Gulf countries? Anyone? So I am showing you the map. Please tell me which are Gulf countries. He's saying that these countries are best. Like in West Asia, where India has big stakes but does not want to be more proactive than Gulf countries, which are lukewarm to the unfolding tragedy in Gaza and Egypt. तो गल्फ कंट्रीज का भी lukewarm response है, यानी बहुत active response नहीं है, not very much active response. And whenever it comes to the tragedy in Gaza and all, that is what he's saying. गल्फ कंट्रीज किसको कहते हैं? देखो ये इंडिया है, दिस इज ईरान, दिस इज सऊदी अरब, ये जो है ना दिस इज एक्चुअली पर्शियन गल्फ। ओके, सो कंट्रीज अराउंड इट इज कॉल्ड एज गल्फ कंट्रीज। इनके आसपास जितनी कंट्रीज हैं इसको हम लोग गल्फ कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। बॉर्डरिंग पर्शियन गल्फ, यस कोनार्क संपत, यू आर राइट। हाँ देखो, आप गौर से देखो, ये पर्शियन गल्फ है, ये ईरान है, ये कुवैत है, इराक का भी बॉर्डर टच करता है, सऊदी अरब का भी बॉर्डर टच करता है, यहाँ यूएई है, और भी कंट्रीज दिखाते हैं। ये जो है ना, ये दिस इज कतर, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर एक छोटा सा है, दिस इज बहरैन, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड नो। ये सऊदी अरब है, ये कुवैत है, इराक है, ईरान है, यूएई है, ठीक है। सो दीज आर गल्फ कंट्रीज। तो ये पता नहीं गल्फ कंट्रीज का उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं जो इसराइल, यहाँ पे गाजा है, इसराइल के बगल में है ना यहाँ पे। सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, कि जितना होना चाहिए उतना नहीं, है ना। सो दैट इज व्हाट नॉन अलाइन मूवमेंट पर आई कैन हैव अ सेपरेट क्लास फॉर दैट, कभी मौका मिलेगा। सो नॉन अलाइन मूवमेंट पे, कि इंडिया हैज हैड नॉइदर जॉइंड यूएसएसआर नॉर इंडिया नॉर अमेरिका ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड, तो इस पर एक सेपरेट क्लास लेना होगा, ठीक है। सो इंडिया एस्पायर्स फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप। मैंने इस क्लास में सारा डिटेल बताया, कहाँ चला गया वो। In this class, I have discussed in detail about UN Security Council, and there are 5 permanent members, and India is not one of them, and India is trying its best to get permanent membership. तो उसके लिए ग्रुप भी बनाएंगे, इसको कहते हैं G4 ग्रुप, है ना, उसमें इंडिया भी है। 4 countries are demanding permanent membership of UN Security Council, ठीक है। So that is what he's saying, कि India is the biggest contender of UN Security Council's permanent membership because it is world's largest democracy, etc. है ना। तो ये सब पता होना चाहिए, है ना। फिर मोदी जी ने कहा था टुडे इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इसको कोट कर रहे हैं उधर यहाँ पर, है ना। देन फिर और चीज बता रहे हैं कि फ्लिप साइड, दूसरा एस्पेक्ट बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसे जगह जिसमें इंडिया ने बहुत आगे आकर काम नहीं किया, इट इज सीडिंग स्पेस टू अदर कंट्री लाइक तुर्की, सऊदी अरब एंड कतर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर का जो मीटिंग हुआ था वो तुर्की में हुआ था, और तुर्की में, ओके, दैट इज व्हाट यू शुड नो। फिर यूएस रशिया यूक्रेन टॉक जो है वो सऊदी अरब में हुआ था। And just now, the president of Rwanda and Democratic Republic of Congo met in Qatar to forge a ceasefire. तो रवांडा और कॉन्गो, तो कॉन्गो और यहाँ पे रवांडा, यहाँ पर भी कंफ्लिक्ट हो रहा था। इसको कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए दोनों आए कतर में बात करने। ओके, रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच टॉक करने के लिए टर्की आए, और यूएस और यूक्रेन की बातचीत सऊदी अरब में हुई। यूएस यूक्रेन, यूएस रशिया की टॉक। तो बता रहे कि हम लोगों ने किसी को नहीं बुलाया एज सच। सो यहाँ पर वी हैव एक्चुअली वी हैव नॉट मेट द एक्सपेक्टेशन, ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने किसी को बुलाएंगे, चलो ठीक है हम लोग टॉक्स कराते हैं रशिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुला के, समथिंग लाइक दैट। सो वी हैव नॉट डन दैट। सो दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। फिर क्वाड की बात हो रही है। क्वाड, आई होप यू आर अवेयर। क्वाड में कौन कौन मेंबर्स आते हैं, प्लीज टेल मी। व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ क्वाड? यू शुड बी नोइंग इट, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पांस, बिकॉज ये बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन है। प्लीज टेल मी। मैप में विजिबल भी, एंड इट इज जनरली कंसिडर्ड एज
a sort of an anti-China platform. हालांकि openly नहीं कहा जाता है, but everyone understand. So basically इसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, and USA है ना. So these are actually Quad countries. Quad बन गया, quadrilateral. US, Japan, Australia, India. Yes, Purti, you're right. Quadrilateral security dialogue. We have discussed so many times, but still I am repeating it because this is very important. अगर किसी का छूट गया है तो देख सकता है ना. क्वाड इन लोग का एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है मालाबार. Although Malabar exercise is very much before Quad started, Malabar exercise was there. Yes, Konark, you're also right. है ना. So that is what you should be knowing. Then RCEP की बात कहेगी, रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. आप RCEP के बारे में मैंने बताया था, आप जाके YouTube पे सर्च करना. ASEAN कैरियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस, ऐसा सर्च करना, you will get that video on ASEAN. Yeah, or you can go to the live section of our YouTube channel. नीचे मूव करते जाओगे, scroll down, you will find ASEAN Association for Southeast Asian Nation. उसे मैंने बताया था कि ASEAN के 10 countries plus 5 other countries ने मिलकर के RCEP बनाया. Ideally it was plus 1 India भी होना था, but India had withdrawn just before the RCEP came into force, because of course it was of our interest not to be part of it. ठीक है, तो RCEP की भी वो बात कर रहे हैं. ठीक है, that is what he is talking about. Now next article is advantage China in Africa's nuclear strategy, market race and all. Nuclear energy. तो बता क्या रहे हैं, अफ्रीका में ना चाइना काफी घुसा हुआ है. I mean, I hope you are aware that China is very much there present in Africa in all the fields, in extracting oil, natural gas, nuclear energy, etc. It is very much ahead. कहा भी जाता है कि इंडिया इंडिया को कोशिश करना चाहिए, but no, China is very much present, so much so that they have established a military port in Djibouti. I'm sure you must have heard. उनका मिलिट्री पोर्ट भी है जिबोटी में. अब वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, गौर से देखना हो, बाबल मंदब के बगल में वो. So that is what you should know. Russia-Ukraine war has demonstrated importance of energy security, where many European countries were caught scrambling and all. तो वही बता रहे हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया यूक्रेन वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है. करंटली अफ्रीका हैज ओनली वन न्यूक्लियर प्लांट एंड एटसेट्रा एंड ऑल. है ना. अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट हो, एक चीज बताते हैं. रशिया यूक्रेन वॉर जब हुआ तो रशिया से बहुत सारे ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड इंपॉर्टेंट एनर्जीज जाते थे यूरोप, but they started boycotting it कि नहीं, because you have attacked Ukraine and all. But the reality is that they have not boycotted. ठीक है, सच्चाई है कि लोगों ने boycott किया नहीं है. This is the reality. Now how I'll tell you. देखो हुआ क्या, एक तो आपने सुना होगा Nord Stream. So from Russia it goes like this, Nord Stream. आपने सुना है ये pipeline? It connects Russia and Germany, and this is actually in Baltic Sea. इसको Baltic Sea कहते हैं. First thing. Second thing is, you will be surprised to know that Russian oil comes to India, and in India the refinery is done and it is sent to Netherlands and other European Union countries. मतलब ऐसा कुछ हो रहा है. देखो इन लोगों ने कहा कि हम रशिया से नहीं खरीदेंगे, we will not buy from Russia. So these European countries said we will not buy from Russia because Russia has invaded Ukraine and all. ठीक है, कोई बात नहीं. So basically Russia is exporting to India. In India we are doing refinery. आपने सुना होगा जामनगर में there is a huge refinery, है ना, oil refinery, and there are other places also. तो है रिफाइन हो रहा है, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है नेदरलैंड, और नेदरलैंड के थ्रू यूरोपियन यूनियन में. तो बात तो वही हुई ना. So we are, of course, Indians are getting benefited because we are exporting it, and the refinery after refining it, and Russian crude oil and exports consider volume of petroleum products, है ना. Netherlands is the prime destination of India's petroleum products. So petroleum products मतलब refine होने के बाद, और रशिया से जो ले रहे हैं we are buying it actually is the crude oil. ठीक है. So these are the things. है ना. Europe brought Russian oil via India at record rates in 2023. ठीक है. So and they are saying it that we are not buying from Russia, but the reality is they are buying. ठीक है. So this is what you should know. देखो आर्टिकल आई थी 10 नवंबर 2024, 12 जनवरी. हाँ, फ्रांस हैज डोमिनेटेड अफ्रीकाज न्यूक्लियर मार्केट. तो ये बता रहे कि अफ्रीका में भी अगर आप देखोगे, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट अफ्रीका आल्सो, कि एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है कोएबर्ग साउथ अफ्रीका में, बिल्ट बाय फ्रेंच कंसोर्टियम. ठीक है. तो ये बता रहे हैं अब हो सकता है कि चाइना विल गो देयर. ठीक है. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हेयर बनाए कहाँ, क्यों बनाया गया है? न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए, just to generate nuclear energy. That is what you should be knowing about. Russia, another important player in Africa's nuclear market, has inked several agreements with Egypt, Mali, Burkina Faso, Burundi, etc. Even Russia ने भी ये सबसे agreement कर लिया, Egypt, Mali, Burkina Faso, Burundi.
है ना, कहाँ चला गया, इजिप्ट, माली, बुर्किना फासो भी यहीं पे कहीं पे होगा, और बुरुंदी वगैरह सब यहीं पे होगा, इन नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज से, ठीक है। ये डन अग्रीमेंट, रशिया हैज डन अग्रीमेंट, है ना। रशियाज रोसातम हैज बीन, रोसातम एक कंपनी है ना, हैज बीन बिल्डिंग रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनाती है इजिप्ट में, है ना। ऑल्दो इट इज स्लो बट दे आर मेकिंग इंटरेस्ट, साउथ कोरिया ने इंटरेस्ट देखा, बिकॉज अफ्रीका में बहुत पोटेंशियल है, there's a huge potential, there are lot of natural resources which cannot be extracted by them, क्योंकि उन लोग इतना एडवांस नहीं है तो वो लोग खुद एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो दूसरी कंट्री की मदद चाहिए, इसीलिए दूसरे दूसरे मुल्क आकर के वहां एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। चाइनाज न्यूक्लियर एम्बिशन इन अफ्रीका इज अ रिलेटिवली न्यू फेनोमेना, नया है, लेकिन चाइना इज वेरी मच अहेड, वेरी फास्ट दे आर डूइंग इट। In 2012, in cooperation with IAEA, International Atomic Energy, China Atomic Energy Agency began scholarship program for students of African and South Asian students. तो शुरू में क्या किया चाइना एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी ने कि स्कॉलरशिप देने लगे, मगर धीरे धीरे ऐसे ही नहीं जाते हैं, पहले स्कॉलरशिप देंगे, वहां से बच्चों को बुलाएंगे, पढ़ाएंगे, दे विल टीच एंड ऑल, ठीक है, एंड लेटर ऑन दे विल आस्क फॉर द प्लांट और न्यूक्लियर द प्लेस और द लैंड फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट और समथिंग लाइक दैट, है ना। चाइना जो है इट्स वेरी मच देयर इन अफ्रीका in different source, different fields and all, ठीक है। So that is what is being talked about. Forum on China Africa cooperation वगैरह की बात हो रही है बीजिंग नाइजीरिया में, ठीक है। फिर युगांडा से है ना, they have signed MOU, memorandum of understanding, MOU मतलब एक तरह का agreement होता है ना, to build 2 gigawatt nuclear power plant etc. That is why it is very much in the news. इतना डिटेल नहीं जाना, मेरे एक रफ आइडिया होना चाहिए। वेस्ट अफ्रीका में जनता लीडर्स, बुर्किना फासो, नाइजर, माली में प्रो रशियन गवर्नमेंट है, हमने बताया नहीं ये सब रीजन में प्रो रशियन गवर्नमेंट यहाँ पर, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड नो, दीज आर द थिंग्स। फिर अफ्रीकाज न्यूक्लियर एम्बिशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया, तो ये बता रहे कि इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा अगर जैसे चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी वी हैड डिस्कस्ड आल्सो, है ना। सो बिकॉज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव द सेपरेट क्लास वी विल बी टेकिंग कि द चाइना इज व्हाट इज डूइंग, इट इज डूइंग, है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें क्या है कि पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाइना को, ना कहां चला गया, चाइना विल बी कनेक्टिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड with the help of roads, railways, pipelines, and now even maritime, so through port also, है ना। that is what is being discussed here, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक साइड में आर्टिकल थी टॉकिंग अबाउट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी which actually is actually supposed to scrutinize the CAG report। तो हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट वीक में we'll be having a class on important committees, ठीक है। तो उसमें मैं और जितनी फेमस कमिटीज हैं प्लस पार्लियामेंट्री कमिटी सब डिस्कस करा दूंगा, वहां पार्लियामेंट अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी भी डिस्कस कराऊंगा, आई विल डिस्कस देयर, ठीक है। वेयर आई विल डिस्कस अबाउट सीएजी एटसेट्रा एंड आल्सो। तो सीएजी जो होती है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल व्हिच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 148, दिस सीएजी एक्चुअली इसकी जो रिपोर्ट पेश होती है व्हेन इट इज पब्लिश्ड और इनपुट इन पार्लियामेंट, इट इज स्क्रूटनाइज्ड बाय a parliamentary committee called as PAC, Public Accounts Committee, ठीक है। तो ये facts आपको पता होना चाहिए, these are the things you should be knowing. So we'll discuss this, what is Public Accounts Committee in the upcoming next week class, है ना, that is what you should know. Cabinet increases dearness allowance, डी मतलब डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, है ना, डियरनेस कॉस्टली हो जाना कोई चीज, है ना। So for the central government staffs and pensioners, dearness allowance and dearness relief have increased. ये बस पता होना चाहिए। जस्टिस वर्मा केस ही आपको पता होगा, इन हाउस इंक्वायरी मींस विद इन द जुडिशियरी द इंक्वायरी हैज बीन डन, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। और वीरा स्वामी केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नाउ, दिस इज व्हाट इज देयर इन द न्यूज। और इसी क्लास में मैंने वीरा स्वामी केस के बारे में बताया था, एंड आई टोल्ड यू दैट सिंस ही हैड डाइड रिसेंटली दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये जज साहब के न्यूज के बाद। सो आफ्टर दिस न्यूज इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो अबाउट वीरा स्वामी केस, हाउ द रिमूवल प्रोसेस इज डन। सो एससी जज रिमूवल करियर लॉन्चर लॉन्ट एंड सर्च करोगे, यू विल गेट दिस, एंड आई होप यू आर अवेयर दैट द रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट जज इज एक्जैक्टली द सेम। मैंने आपको बताया भी था इन दिस क्लास। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, if I need to register an FIR against a Supreme Court or a High Court judge, I need permission from which person? इस क्लास में मैंने बताया है, in Veera Swamy case, Supreme Court has said this. To register an FIR against a High Court or a Supreme Court judge, the permission is required from which authority? बताइए।
Anyone? I had taught in this class. के वीरास्वामी केस में ही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ लिखा हुआ भी है, without the consultation of the Chief Justice of India ना. So it needs permission from CGI to register an FIR against a High Court or a Supreme Court judge. Please remember it. मैंने इस क्लास में बताया है. Please watch it. This is star market. This is important. है ना? Then ये है वर्ल्ड पेज में पुतिन फ्लोट्स आइडिया ऑफ यूएन लेड गवर्नमेंट फॉर यूक्रेन. तो पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में यूनाइटेड नेशन लेड गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड ऑल, है ना. फिर अर्थक्वेक्स आया था म्यांमार, थाईलैंड में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एक और न्यूज़ है, बांग्लादेश वेलकम्स चाइना टू पार्टिसिपेट इन तीस्ता प्रोजेक्ट. And you'll be surprised because I was reading about it. और तीस्ता का चाइना से क्या लेना है? It is not there in China. So if you see it carefully, this is Yarlang Sangpo river and ये वाली तीस्ता है, ठीक है. So let me zoom it further. ये वाली रिवर आ रही है ऐसे, ये Yarlang Sangpo river is there, and here it is called as, in Assam it is called as Brahmaputra, and in Bangladesh it is called as Jamuna, ठीक है. और यहां से सिक्किम से एक रिवर आती है यहां से, दिस इज कॉल्ड एज तीस्ता, एंड ऑफ कोर्स इट डज नॉट गो टू चाइना, है ना. सो इट इज अ डिस्प्यूट. समटाइम्स तीस्ता रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट हैपेंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. कभी-कभी इशू, फ्रिक्शंस वगैरह भी हो जाते हैं. सो बेसिकली इट इज सेइंग बांग्लादेश ऑन फ्राइडे वेलकम चाइनीज पार्टिसिपेशन इन तीस्ता रिवर कंप्रेहेंसिव मैनेजमेंट प्रोग्राम, है ना. Bangladesh assured has communicated during the ongoing visit of Chief Advisor Mohammad Yunus to China. ठीक है. देखो Zangbo, Jamuna river, तो ये तो ब्रह्मपुत्र का हो गया. But what is the need for Teesta? I don't know. Like, but it is in the news, so you should know it. Teesta river also. And the two sides would promote high quality agreement, Belt and Road Initiative. ये तो अक्सर न्यूज में रहता है, Belt and Road Initiative, है ना. So this is an initiative to connect China with the rest of the world. That is called as Belt and Road Initiative. ठीक है. So this is all about today's class. Thank you everyone. Today at 7:30 p.m. I will be meeting with a quiz on GK, whatever I have done. जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना, parts of the Indian Constitution, schedules of the Indian Constitution, है ना, important amendments. So इस पर एक quiz होगा आज 7:30 बजे. Please do join me. So thank you everyone. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thanks for watching. Have a nice day.